Bismillahirrahmanirrahim. Self exercise 1.4 part 2. Part 1 we have done. According to part 2, aluminium react with bromine to form aluminium bromide as shown by the balanced chemical equation. 2 aluminium plus 3 bromine arrow 2 aluminium bromide. If 15.8 gram of aluminium and 55.6 gram of bromine are available for reaction, then determine the limiting reactant and mass of aluminium bromide form. अगेन हमें मैस गिवन है एलुमिनियम का एंड मैस गिवन है ब्रोमाइन का. अगर हम इस अमाउंट से रिएक्शन करवाएं तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा ये फाइंड करना है. सेकंड थिंग, हमें कितनी प्रोडक्ट मिलेगी ये बताना है. तो अब तक हमें प्रैक्टिस हो चुकी है और पता चल चुका है कि जो अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा उतना अमाउंट ही प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट में. और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जो गिवन अमाउंट में से जो हमें अमाउंट गिवन है उनमें से जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा. इस गिवन मैथ से सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो हमें मोल से डील करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मोलर मैथ. मोलर मैथ से अमाउंट ज़्यादा होता है, लाइक जो सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द आइटम्स होता है वो हंड्रेड्स में भी हो सकता है, 200 में भी हो सकता है. तो उस अमाउंट को डील करना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. दैट्स वाई हम नंबर ऑफ़ मोल से डील करते हैं, बिकॉज मोल या तो पॉइंट्स में होगा या फिर राउंड ऑफ फिगर्स में होगा, जिन्हें डील करना, जिन्हें मल्टीप्लाई करना, सम अप करना ईजी होगा और एंड में हम अगेन नंबर ऑफ़ मोल से मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल फाइंड आउट करेंगे एल्यूमिनियम के. Mass of aluminium is 50.8 gram. Atomic mass of aluminium is 27 gram. Number of mole we have to find out, given mass divided by molar mass. 15.8 gram is given mass divided by 27.8 gram is molar mass. That is equals to 0.568 moles. 0.568 moles of aluminium are given. Now mass of bromine. Mass of bromine is 55.6 gram, whereas molar mass of bromine is 79.9. For one bromine there is Br2 bromine molecule. So 79.9 multiplied by 2 is equals to 159.8 gram per mole. हम राउंड ऑफ करके इसे 160 ग्राम पर मोल भी ले सकते हैं. 50 now number of moles given mass divided by molar mass, 55.6 gram divided by 159.8 gram, answer will came as 0.348 mole. That is given. Now determination of limiting reactant. Limiting reactant की determination जो हम करेंगे वो with the help of balanced chemical equation करेंगे. 2 mole of aluminium gives 2 mole of aluminium bromide and 3 mole of bromine gives 2 mole of aluminium bromide. हम इनके इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 मोल ऑफ aluminium produced 2 mole of aluminium bromide. 2 mole produced 2 mole, 3 mole produced 3 mole, 4 mole will produce 4 mole and so on, means same amount produce हो रहा है. So 0.568 mole of aluminium will produce 0.568 mole of aluminium. हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं या अगर हम इसे इज इक्वल्स टू एक्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब भी सेम आंसर आएगा जैसा कि यहाँ गिवन है. 0.568 मोल ऑफ aluminium इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.568 मोल ऑफ aluminium. Answer will came as 0.568 mole of aluminium bromide. Means 0.568 mole of aluminium will produce 0.568 mole of aluminium bromide. Now we will check the relation of bromine with the product with the help of balanced chemical equation. 3 mole of bromine is producing 2 mole of aluminium bromide. 3 mole of bromine is producing 2 mole of aluminium bromide. 0.348 mole of bromine
will produce x amount. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.348 इधर आ जाएगा एंड x मल्टीप्लाई बाय 3 x फाइंड आउट करना है तो 3 डिवीजन में चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.348 is equals to 0.232 moles of aluminum bromide means 0.348 mole of bromine will produce 0.23 mole of 232 mole of aluminum bromide. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे विच इज़ द लीस्ट अमाउंट 0.568 मोल और 0.232 मोल्स. Of course 0.232 moles of aluminum bromide is the least number of mole. So bromine is the limiting reactant because this is producing least number of mole of product. And आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो अमाउंट लीस्ट रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा जो लीस्ट अमाउंट होगा वही हमें उस गिवन अमाउंट से प्रोडक्ट मिल सकेगी और जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा उसका एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगा वो लेफ्ट रहेगा अनरिएक्टेंट रह जाएगा. सो इस फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया. फर्स्ट पार्ट का लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ब्रोमीन. ब्रोमीन प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देयरफॉर दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाउ सेकंड पार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड. तो जितना अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा उतना अमाउंट ही प्रोड्यूस होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोड्यूस किया है 0.232 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड. So number of mole of aluminum bromide produce 0.232 moles of aluminum bromide. Molar mass of aluminum bromide is 27 multiplied by 1 for aluminium plus bromine is 79.9 multiplied by 3. Sum is 266.7 gram per mole. So amount of aluminum bromide will be 266.7 multiplied by 0.232 because we can calculate the molar mass with the help of number of mole multiplied by the molar mass. 0.232 number of mole multiplied by the molar mass, that is 266.7 is equals to 61.87 gram. 61.87 gram is the amount of aluminum bromide that is produced by this given amount of aluminum and bromine. Hope you have understand well. Thank you.